Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Sumit Arora. Today we will discuss the drug that belongs to the category of resin, in which our first drug is Myrrh. So let us start with Myrrh. This Myrrh belongs to the chemical class of resins. The synonyms are gum resin, myrrh, bowl, gum myrrh, Arabian or Somali myrrh या Myrrh. This Myrrh is the commonly named और commonly called as myrrh और bowl BOL. ये दो सिनोनिम जो है ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मिर ड्रग के लिए. मिर जो है ये रेजिन कैटेगरी को बिलोंग करता है. नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल सोर्स. दिस मिर इज नथिंग बट द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम पोर्शन ऑफ कॉमीफेरा मुलमुल. Earlier we have seen the drug Asafoetida. It also belongs to the category of resin and it is also oleogum resin. So both Asafoetida and Myrrh are oleogum resins, right? Here Myrrh is obtained from the stem portion of Commiphora molmol. Remember the name of the plant Commiphora molmol or other species of Commiphora. It belongs to the family Burseraceae, right? तो बुरसेरासी फैमिली का ये पहला ड्रग है जो अपन देख रहे हैं, उसका नाम मीर है, ओलियोगम रेजिन कैटेगरी को बिलोंग करता है. और ऐसा ही जो ड्रग असाफोइटिडा ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सिंस दिस थ्री पोर्शंस आर प्रेजेंट ऑलियो गम एंड रेजिन, सो मीर कंटेन रेजिन अराउंड 25 to 40%, followed by gum around 57 to 61% and volatile oil 7 to 17%. So all these oleo gum resins are present in the Myrrh. Remember, if you are taking these three constituents individually, then there are different constituents present in their respective classes. For example, resins. So large portion of the resins is either ether soluble substance containing alpha, beta or gamma commipheric acid, resins and the esters of another resins and phenolic compounds. यानी कि ऑलियोगम रेजिन्स में से जो रेजिन्स का पोर्शन है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा कॉमीफोरिक एसिड. ये कॉमीफोरिक एसिड जो है आपको कॉमीफोरा जो मोलमोल अपन ने प्लांट का नाम पढ़े उससे ये वर्ड याद रखना है. कॉमीफोरिक एसिड इज द मेजर कंपोनेंट फाउंड इन द रेजिनस पार्ट ऑफ मिर. अदर देन दिस इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ रेजिन्स, द ईस्टर्स ऑफ अनदर रेजिन एंड फिनोलिक कंपाउंड्स. Other than this alpha, beta and gamma commiphoric acid, there are two more substances, alpha, beta hierabo-myrrholic acids are present. They are ether insoluble acid, while our drug alpha, beta, gamma commiphoric acids are ether soluble. तो यहाँ पे ये डिफरेंस आप याद रख सकते हो. Three compounds are ether soluble in nature, while two constituents, that is alpha, beta hierabo-myrrholic acids are ether insoluble present in the resinous part. Second part जो आता है वो है volatile oil part. This volatile oil part of this myrrh is a mixture of cuminic aldehyde, eugenol, cresol, pinene, limonene. ये सारे टर्पिनॉइड जो है ये volatile oil पोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे मिर के एंड sesquiterpenes. While the disagreeable order of the oil is due to mainly the disulfide. Other than this terpenoids, the disulfide compounds are also present in the volatile oil portion of the myrrh, and the disagreeable order of the oil is because of the presence of that disulfide compounds. Right? Third portion is called as gum. Here the gum contains 18% of the proteins and 64% of the carbohydrates. Means the gum portion is rich in carbohydrate, and the carbohydrate is nothing but the mixture of galactose, arabinose and glucuronic acid. Other than this, you have to remember the gum is associated with one more enzyme here called as oxidase enzyme. So you have to remember this from entrance point of view. The oxidase enzyme is associated with the gum portion of myrrh. इस तरीके से आपको केमिकल कॉन्स्टेंट पढ़ना है मिर का. तीन पोर्शन के हिसाब से रेजिन्स, ऑयल और गम में. रेजिन्स में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है? दो कंपाउंड है, एक ईथर सोलुबल और एक ईथर इनसोलुबल. वोल्टल ऑयल में टर्पिनॉइड्स है और डिसएग्रीएबल ऑर्डर जो है वो डाइसल्फाइड की वजह से है. और गम पोर्शन जो है उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स है. दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज, अराबिनोज एंड ग्लूकुरोनिक एसिड. एंड वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस गम ऑफ मिर इज एसोसिएटेड विद द ऑक्सीडेज एंजाइम्स. राइट. नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल टेस्ट की. देयर आर टू केमिकल टेस्ट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिर. फर्स्ट, you will have the yellowish brown emulsion on trituration with water, right? Because it contains the oil portion, so you will have the emulsion after trituration with water. So yellowish brown will be the emulsion. Second is ethereal solution of the myrrh turns red on treatment with bromine vapors, right? आपको solution लेना है मिर का, उसको ईथर में डिजोल्व करना है, या इथरल solution आप मिर का बनाओगे
और उसको ब्रोमीन वेपर के साथ रिएक्ट करते तो यू विल हैव द रेड कलर एंड द सॉल्यूशन फाइनली बिकम्स पर्पल आफ्टर रिएक्टिंग विथ नाइट्रिक एसिड. So these two tests are often used for the identification of myrrh. Last is uses. This myrrh is basically used as a carminative and in incense and perfumes. Incense sticks जो बनाते हैं अगरबत्ती बोलो या परफ्यूम्स उसमें मिर्र जो है यूज़ करते हैं. मेडिसिनली इट इज़ यूज एज अ कार्मिनेटिव एंड लोकल स्टिमुलेंट. और एक खासियत मिर्र की यह है कि मिर्र possesses एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. Hence, because of this property that can be utilized in the formulation of tooth powders, mouthwashes, gargling, etc. Topically, it is astringent to the mucous membrane. That's why it's also used in the form of tincture, disinfecting agent, deodorizing agent, and inflammatory disorder associated with the mouth and throat infections. लास्ट यूज जो है वो है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो है. इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट आप परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली 3 यूजेस जो है इसमें बात कर रहे हैं. तो अपन इंसेंस स्टिक में, परफ्यूम्स में, एंटीसेप्टिक होने की वजह से गार्गलिंग में या डीऑडराइजिंग एजेंट में या एंटी इन्फ्लामेटरी करके यूज़ हो सकता है माउथ में या थ्रोट के कंडीशंस में. राइट, दिस इज ऑल अबाउट मिर्र दैट यू हैव टू रिमेंबर. फॉर फर्दर क्यूरीज यू कैन मेल मी एट sumitkishanarora@gmail.com. थैंक यू वेरी मच. एंजॉय द रीडिंग.